As many as 3 lives were claimed in attacks by Asiatic lions in eastern GIR forests in the last 2 months. Following which 13 lions of a pride roaming in the area were captured and encaged in accordance with Gujarat government's orders. An 11-year-old boy, identified as Jayesh Solanki, was attacked by Asiatic lioness in Dari Taluka. He was found dead in a mango orchard owned by Sarpanch, village head of Ambadi village of Amreli district on May 19. Dr. Anirudh Pratap Singh, Junagadh's chief conservator of forest wildlife, said, "There were pug marks of a lioness near the place from where the body was recovered. His father also got injured in trying to save him," he said. Prior to the miner's death, 2 others, identified as 50-year-old woman Labubandi Solanki and 60-year-old man Gina Makwana, were killed in attacks by Asiatic lions in Barad village and Ambadi village, respectively, of Amreli district, he said, with the capturing of 3 lions last night. The total number of the big cats caught and caged has gone up to 13. This exercise would continue, Dr. Anirudh Pratap Singh, Junagadh's chief conservator of forest wildlife, said today. Dr. Shine said the lions were captured from the protected forest in an effort to find the man-eaters responsible for the deaths. They are caged at an animal care center in Jasadar. We are taking the lion experts' help. We are also taking help of those trackers who are working day and night with the lions since many years. But we want to know that why did lions attack on humans, because they never attack humans. Lions that have preyed upon humans will be analyzed in detail, while the rest will be slowly introduced back into the wild. Dr. Singh told, "We will be doing a scat analysis, which includes testing the animal's feces for human tissues, chemical analysis of their blood and even genetic analysis. If traces of the boy are found in scat of any of the pride members, those lions may remain in cages for a long time," forest officials said. Local residents as well as leaders of Amreli have been demanding action against man-eater lions for quite some time. Man-lion conflicts are rare in and around GIR forests, said to be the last abode of Asiatic lions, whereas per the last census conducted in 2015. The count of the big cat stood at 523 and endangered Asiatic lions are living only at GIR Forest of Gujarat. કાલે હા અહીંયા ખાઈને પાંજરામાં જોવાનું. સિંહ આવશે ને બસ આમ રાખશો તો હાલશે. રેડી હવે કાઈ નો કરો. ઓલી બાજુ કરવું પડશે થોડું. નહીં કાઈ નહીં. મારો ધક્કો મારો ધક્કો રાખ દો ભાઈ. મજબૂત માણસો હોય. ધક્કો રાખ. હવે ઓટોમેટિક છે બધાને પડવામાં મળશે ને વાંધો. અલ્યો સમીરભાઈ
આખું ખોલું બાપુ એ ધક્કો મારવો જોરથી ધક્કો મારીને આ ભીતે સોટાડવું પડશે ચાલી હા હે હા હલાવી કે આમ જો આ જગ્યા ખાલી કરી હું બધું પાંજરાને એમ ધક્કો ન મારતો પાછું અડી ગયો આયા બધું કોટ લઈ લે છે બોલા મંડાલ તો ये जैसे बोली बजे बाटलो ना રાખી હવા ના કરો એક આઈ ટેપો આ એક આઈ ટેપો ને કાંઈથી ગરમ હતી ગયા આયા કેમ નામ આયા આથી આમ ગયા કાંઈથી આમ ગયા હાલો એમ નહીં આગળ એમ નથી આમાં કઈ મૂકો આમાં એટલે એ છે એટલા બધું પક્ષી કામ કરી પક્ષી બોલે છે આ ધોવાને ફરી અને આમ જઈ કારણ કે અહીંયા માથે ભરાવું અને આગળ ડારો દઈને આમ ફરી નથી જવું તો એ પાછા ઊંઘો નીકળી જાય આપણે કામ કરીએ અહીંથી આમ જઈએ એટલે ઓલો ખુલ્લો પડશે ને ત્યાં જાય બરાબર હા બાપના ધોવા છે મેં થયું આગળનો ફરતા ધોવા ભરી
आपको पता है कि जो एशियाई सिंह हैं वो गुजरात के सौराष्ट्र में गिर नेशनल पार्क और सेंचुरी में पाए जाते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में एशियाटिक लायन कंजर्वेशन में ये सबसे सक्सेस स्टोरी तरीके मानी जाती है कि हम वन विभाग ने 50 शेरों से लेके आज हम करीब 550 के आसपास शेर हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ी है तो हमारे नेशनल पार्क और सेंचुरी में अंदाज में 300 जितने शेर हैं और 250 जितने शेर जो है नेशनल पार्क सेंचुरी के बाहर के विस्तार में अमरेली भावनगर विस्तार में रेवेन्यू विस्तार में भी घूम रहे हैं। तो अभी जो घटना बनी है ये घटना धारी तालुका के धारी विस्तार के आसपास में 14-15 लाइन का एक प्राइड है। इस प्राइड के द्वारा एक आदमी को मारा था और उसको हमने पकड़ के उसको पाया कि इसने मैन ईटिंग किया है तो उसको हमने सक्करबाग जू में भेज दिया है। इसके बाद ये जो अभी घटना बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी दुखद है और इससे हमें काफ़ी दुख हुआ है। और जैसे ही पता चला तो हमारा पूरा स्टाफ वहाँ पहुँच गया। पहुँच के पूरी कार्रवाई की गई और पूरे विस्तार में गांव लोगों के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं और हमने निर्णय लिया है कि इस पूरे प्राइड को हमें पकड़ के इसको स्थानांतरण करना चाहिए। और हमारा पूरा स्टाफ, हमारी रेस्क्यू टीम इस काम में लगी हुई है और अभी तक 16 लाइन में से हमने 13 लाइन को पकड़ लिया है और पकड़ के इसको हमने अपने रेस्क्यू सेंटर में रखा हुआ है और उसका हम स्कैट एनालिसिस कर रहे हैं। उस एनालिसिस के आधार पर ये पता चलेगा कि इसमें जो मानव मृत्यु हुई है उसमें कौन कल्प्रिट कौन है जिसको हम जू में भेज सकें और बाकी जो लाइन बचेंगे जो कल्प्रिट नहीं हैं उनको हम अध्ययन करके उनका बिहेवियर का अध्ययन करके दूसरी जगह उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करेंगे। सर जी सर, तो ये पहले ऐसा कभी नहीं हो रहा था। गिर में जो लायन है वो सोशल एनिमल है और कभी ऐसे हमले की घटनाएं नहीं सुनी थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वजह क्या हो सकती है सर? हाँ, ये बहुत सही बात है कि सवाल ये है कि ये शेर के केस में ऐसे केस नहीं होते और ये सामाजिक प्राणी हैं, लोगों के साथ रहता है। हमारे जंगल में भी मालधारीज रहते हैं, सेटलर्स रहते हैं, यानी इतने सालों से हिल मिल के रहने वाला प्राणी है। लेकिन ये एकाएक अचानक जो घटनाएं हुई हैं ये एक तपास का विषय है, संशोधन का विषय भी है। तो हमारे जितने लोग निष्णांत हैं इस फील्ड में उन सबको हम लगा रहे हैं, हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं, हमारे अधिकारी अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो फ्रंटलाइन स्टाफ है जो बरसों से काम कर रहे हैं और ख़ास करके हमारे जो ट्रैकर्स हैं, जो शिकारी हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी निकली हुई है लाइन के साथ में, उन लोगों को भी लगा रहे हैं कि स्थल परिस्थिति का जायज़ा लीजिए और ये केस कैसे हुए हैं जिससे भविष्य में ये ना हो। तो इसका एक हम अध्ययन कर रहे हैं, एक अध्ययन का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ है, उसके क्या कारण हैं। ये कुछ कारण सामने आएंगे तो ज़रूर इसके बारे में चर्चा करेंगे।